Hello students. आज लेक्चर आम स्टार्ट करवा ऑस्कुलेटिंग प्लेन रो फर्स्ट क्वेश्चन रो. दिस इज नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. 2 मार्क और 3 मार्क हिसाब रे ही एग्जाम रे आसीबो और सियोर शॉट आसीबो, नो डाउट ऑन दैट. प्रथम क्वेश्चन को पचारछि देखंतु. एठी फर्स्ट क्वेश्चन पचारछि show that if a curve is given in terms of general parameter u, then the equation of the osculating plane is this one. And ये जो corresponding to the osculating plane ये बुक रे given अच्छी कारण जो statement अच्छी जो general statement अच्छी सेटा given देइछि 4.7 पॉइंट रे तेणु से जिनसटा को मैं लिखी किंतु एग्जाम रे आपन को ए लाइन टा पचारिबनी. एतिक ही जिनस पचारिबो शो दैट इफ ए कर्व इज गिवन इन टर्म्स ऑफ जनरल पैरामीटर u, then the equation of the osculating plane is this one. We have to prove this. Okay, चलो तो प्रूफ करिबा. प्रूफ प्रथम स्टूडेंट आमे कंसीडर करिबा गोटे कर्व कारण हम पाखरे जनरल पैरामीटर देछि. स्टूडेंट जनरल पैरामीटर कोन? जनरल पैरामीटर इज नथिंग बट आर्क लेंथ टाइम आपण एग्जांपल हिसाब रे नै पारिबे. ओके, आको जनरल पैरामीटर ही ए सब को कहा जाए. तेणु एठी हमको जो u देछि जनरल पैरामीटर आमे गोटे स्पेस कर्व एठी डिनोट करि परिबा, गोटे कर्व डिनोट करि परिबा, आमे कंसीडर करिबा. ओके, सो एठी लिखि परिबा आमे let the curve be defined parametrically let the curve एठी जो कर्व अछि से केमिति डिफाइंड होउची? पैरामेट्रिकली डिफाइंड होउची. पैरामेट्रिकली आज आको हमें लिखि परिबा केते ना आर यू. आको हमें ए बडे लिखि परिबा पैरामेट्रिकली आज आर यू. एठी यू कोन? यू होउची, यू इज अ general parameter. Here u is a general parameter. ओके, एंड ये जो आर यू अच्छी ना ये कौन डिस्क्राइब करुची स्टूडेंट? ये कौन डिस्क्राइब करुची? पोजीशन डिस्क्राइब करुची. आर यू describe the position of the point on the curve as a function of u. एठी हमें लिखि परिबा the vector ru, the vector ru describe the position of the point on the curve. Position of the point on the curve as a function of u. As a function of u. Correct अछि. नेक्स्ट आमे कंप्यूट करिबा टेंजेंट वेक्टर को. एठी टेंजेंट आमे बाह करिबा. सेति पे आमे कोन करिबा ना आर यू आम पाखरे जो अछि जे कि पोजीशन एठी डिस्क्राइब करूची ताको आमे डिफरेंशिएट करिबा. ओके, विथ रेस्पेक्ट टू यू आमे कोन करिबा ना डिफरेंशिएट करिबा. नाउ प्रथम आमे लिखिबा द टेंजेंट वेक्टर to the curve at a point is the first derivative
ऑफ आर यू जो आम आर यू नहीं ना तार ही फर्स्ट डेरिवेटिव को ही एटी टेंजेंट वेक्टर कह जाए ऑफ आर यू एंड आम कह डेरिवेटिव करछे विथ रेस्पेक्ट टू आम लिखा के क्या रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करछे ओब्वियसली यू रेस्पेक्ट करछे ना विथ रेस्पेक्ट टू यू फाइन स्टूडेंट ताले आम जदि डेरिवेटिव करवा केते आर डैश यू केते हो जिवो दिस इज नथिंग बट डी आर बाई डी यू ओके आमे एटी स्टूडेंट कौन लिखि पारिबा ये जो वेक्टर जो टेंजेंट वेक्टर ये कौन एठी डायरेक्शन कौन दउची सुनंतु एठी आमे लिखि पारिबा दिस वेक्टर पॉइंट ये जो वेक्टर पॉइंट आर डैश यू हम बाहर करले ये दिस वेक्टर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व मोशन एट दैट पॉइंट माने ये जो टेंजेंट वेक्टर अछि ना ये एक कर्व रो दिग को ही दर्शाउची माने को डायरेक्शन रे जीवो कर्व बुझि पाले ये कर्व रो डायरेक्शन को माने आर यू रो डायरेक्शन आर यू को डायरेक्शन रे जाउची सेटा को ये बतौची कि ना आर डैश यू बुझि पाले थी जिंस तेणु आमे एठी लिखि परिबा दिस वेक्टर it means tangent vector okay this vector point in the direction of the curve's motion of the curve's motion at that point okay then next आसिला हमरो सेकंड डेरिवेटिव वर्तमान करिया माने आर यू जो थिला ताको फर्स्ट डेरिवेटिव कले टेंजेंट वेक्टर और सेकंड डेरिवेटिव वर्तमान करिवा आम ये लिखिदे कि द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर यू द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर यू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर यू इज इक्वल टू आर डबल डैश यू आम आपको लिखिपर आर डबल डैश यू which is equal to एटा स्टूडेंट हमर केते थिला dr by du थिला तार सेकंड डेरिवेटिव केते आसी जीवो d स्क्वायर r by d u स्क्वायर ओके फाइन स्टूडेंट एंड जो सेकंड डेरिवेटिव ये कौन डिस्क्राइब करूची ये डिस्क्राइब करूची हाउ द टेंजेंट वेक्टर इज चेंजिंग केमिति टेंजेंट वेक्टर चेंज होउची माने सीता डायरेक्शन को केमिति बदल होउची बुझि पाले सी सेकंड डेरिवेटिव ही एठी निर्णय करिवो माने ये डिस्क्राइब करिवो ओके ता माने हमें लिखि परिबा दिस डिस्क्राइब द सेकंड डेरिवेटिव दिस डिस्क्राइब how the tangent vector is changing okay so the second derivative that describe how the tangent vector is changing and it is related to the curvature of the कर्व ये का को रिलेट करूची ये सेकंड डेरिवेटिव रिलेट करूची कर्वेचर को कारण देखंतु माने करो मुठी आपन गोटे डायग्राम करी देखौची ये कर्वेचर ये कर्व कला ओके ये ता डायरेक्शन आई चेंज कला पुनी एपटे डायरेक्शन चेंज कला ओके तो ये जो डायरेक्शन चेंज करूची आमे एठी गोटे कर्वेचर पाउचे ये कर्वेचर पाउचे बिल्कुल पाउचे ओके तो ए जिंसटा को ही डिस्क्राइब करूची तो आमे लिखि परिबा कि द सेकंड डेरिवेटिव that describe how the tangent vector is changing and it is related to
it is related to the curvature of the curve. ओके, ये फाइन स्टूडेंट, ये ठीक अच्छे। नाउ बर्तमान आम कौन करवा ना नॉर्मल बाहर करवा, कारण एठी आम प्रोडक्ट नवा। देखो आम टैंजेंट बाहर कले, दर सेकेंड डेरिवेटिव एठी बाहर कले जे कि टैंजेंट रही एठी पोजीशन को डिस्क्राइब करछि, बा टैंजेंट रही एठी कौन सेमिति चेंजेस होउछि ताकू डिस्क्राइब करछि। एठी बर्तमान आम बाहर करवा नॉर्मल वेक्टर टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। normal vector to the osculating plane. नॉर्मल वेक्टर आमे बर्तमान बाहर करवा। एठी आमे स्टूडेंट लिखि परिवा कि द ऑस्कुलेटिंग प्लेन is spanned by the tangent vector r dash u and the second derivative that is r double dash u. Okay, ये कहूँ कि the osculating plane that is spanned by the tangent vector r dash u and the second derivative that is r double dash u, then the normal vector to this plane is given by, so normal vector haba to this plane is given by the cross product of these two vector को दिटा वेक्टर कथा कहूँ r dash u आउ r double dash u, ताहले ये दी जनकर जतले प्रोडक्ट हुए सेतेबेले ही हमको नॉर्मल वेक्टर मिली थाए। ओके, तामाने आमे एठी लिखि परिया स्टूडेंट नॉर्मल बा n इज इक्वल टू r dash u क्रॉस r double dash u। ओके, ये ही डिस्क्राइब करछि n दैट इज नॉर्मल इज इक्वल टू r dash u क्रॉस r double dash u माने tangent vector और तर सेकंड डेरिवेटिव। एंड आमे स्टूडेंट एठी लिखि परिबा the normal vector, this normal vector n is perpendicular to the osculating plane। ये जो नॉर्मल हो ना ये परपेंडिकुलर हेतिबो कोन काको ना ऑस्कुलेटिंग प्लेन को। ऑस्कुलेटिंग प्लेन मु आपन को पूर्व लेक्चर रे देखैतिली, ऑस्कुलेटिंग प्लेन विषय बुझैतिली, डायग्राम सहित बुझैतिली और वीडियो मध्ये आपन को देखैतिली। सो द नॉर्मल वेक्टर n is perpendicular to the osculating plane।
ओके ये हूँ नॉर्मल नॉर्मल जोटा कि परपेंडिकुलर होइथिबो कोठी कि ना ऑस्कुलेटिंग प्लेन को तो स्टूडेंट बर्तमान आम पाखे जो आर अच्छी ना सेटा को आम बर्तमान चेक करवा कि आर हूँ कौन एठी आम एठी कंसीडर करवा नाउ let us consider capital R जोटी कि आम पाखे गिवन अच्छे स्टूडेंट कैपिटल R be any fixed be any point ओके तो स्टूडेंट देखो ये मुझे लिखिली नाउ लेट अस कंसीडर जो आर हमको गिवन देछि कैपिटल आर ताको गोटे पॉइंट आम नेले स्पेस रे ओके सो फॉर आर to lie in the osculating plane. Now let us consider R to be any point in a space for R to lie in a osculating plane. The osculating plane रे हमें R को एठी lie करूचे at RU the vector then the vector R minus RU R minus RU देखो जदि R टा शुणु आ जदि R टा ऑस्कुलेटिंग प्लेन रे एग्जिस्ट करूची बा लाई करूची ताले हमको एठी मध्य कंक्लूड हवा को पड़ियो कि R minus U R कैपिटल R minus RU मध्य कोठी एग्जिस्ट करिवो ना प्लेन रे एग्जिस्ट करिवो कोठी ना ऑस्कुलेटिंग प्लेन रे एग्जिस्ट करिवो द वेक्टर R minus RU must lie in the plane ओके ता माने कोन जदि देखंतु ये प्लेन रे लाई करूची ओके सो एठी हमें कहि परिबा दिस मीन्स ता माने कोन R minus RU must be perpendicular to the normal vector n and this n is nothing but the product of tangent and its second derivative तेणु स्टूडेंट आम एठी लिखि परिबा कि द कंडीशन for the condition of perpendicularity is the dot product of R minus RU and the normal माने जो R minus RU जी की लाई करूची ठीक अछि is the dot product of R minus RU and N okay each
0। तो से कौन कहूँ देखो कि परपेंडिकुलारिटी जो कंडीशन अच्छी से कौन कहूँ कि स्टूडेंट कहूँ से कि आर माइनस आर यू जदि परपेंडिकुलर हो नॉर्मल को ताहले सेमानकर जो आर माइनस आर यू ये भी गोटे वेक्टर ओके। सो ये वेक्टर आउ नॉर्मल एमानकर जो क्रॉस प्रोडक्ट हम ना एमानकर जो डॉट प्रोडक्ट हम एमानकर जो डॉट प्रोडक्ट हम सी इक्वाल करिवो 0 को ठीक अच्छे। तेणु आमे ये परपेंडिकुलारिटी रो कंडीशन को लेकिन लिखि पारिबा केते ना आर माइनस आर यू डॉट एन इज इक्वल टू 0 okay। Now substituting the value of n substituting the value of n n रो वैल्यू केते r डैश आउ r डबल डैश रो ही क्रॉस प्रोडक्ट ना n तेणु आमे सेटा को यूज करिवा एठी। सो r माइनस r u n इज इक्वल टू एठी मु लिखि दउची r डैश u क्रॉस r डबल डैश u। सो r माइनस r u आपको मु ब्रैकेट लिखि डॉट r वैल्यू में दे दवा केते r डैश u क्रॉस r double dash u okay student which is equal to 0 okay। so ताकू जदि आमे भला बेठी अरेंजमेंट करिकी लिखि पारिबा देन हम पाखरे फाइनल रिजल्ट आसी जबो एटा ही हमरो स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट थिला केते r minus r dash r double dash is equal to 0। So this implies that r minus r okay। so देखो और काम करिया r minus r u comma r dash u comma r double dash u is equal to 0। It implies that student u as a common आमे नहीं आसीबा एठी ताले एठी हबो r minus r u सॉरी u आव एठी काई रहइबो ये केवल हि जीवो r and r dash r double dash is equal to 0 how u type को जदी पळे आसीबो ताले हम बखरे एठी रहि जीवो r minus r comma r dash comma r double dash। so this is equal to 0 okay। so hence we proved तो ये प्रूफ कर देली स्टूडेंट ये आपन को बड़ लगुच कि बिल्कुल बड़ लगुनी ये एक्चुअली 3 मार्क रो ही क्वेश्चन बिल्कुल भी लॉन्ग क्वेश्चन ना किछि नै मु एक्स्ट्रा किछि थ्योरी पुरैछि जदि आपन 2 मार्क रो पढुछि ताले एते भी थ्योरी आपन लिखिबा दरकार नै बस r डैश r डबल डैश लिखिबे एंड कंडीशन ऑफ एटी कंडीशन टा को अप्लाई करिवा परपेंडिकुलरिटी रे जो कंडीशन अछि ये जो एनकर जो प्रोडक्ट हबो ओके r माइनस r u आउ नॉर्मल एमानकर जो प्रोडक्ट हबो से 0 इक्वल हबो डॉट प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली तेणु ताको वैल्यू पुट कर देले डायरेक्टली आपन को रिजल्ट मिली जिवो ये 2 मार्क हिसाब रे जदी पड़े आपको लिखिबे मोस्ट प्रोबेबली ये 3 मार्क रही एग्जाम रे आसी थाए ठीक अछि। तो ये एति के बड़ लिखिबे किछि प्रॉब्लम नै स्टूडेंट 3 मार्क आराम से मिलिबो तेणु बिल्कुल भी कंजूसी करिवार नाही पूरा पूरा टोटल ही लिखिबे जेमति मु डिस्क्राइब करी कि लिखिली सेमि जदी आपन लिखिबे टीचर माने बहुत खुशी हेबे और भलो मार्क भी देबे ओके।
एटी एतिका जिनस यदि आप लिखिए ना तो टीचर जी भी देखिए सी एटलिस्ट जानवे कि आपंकर पूरा डीप नॉलेज अच्छी और सब किसी आप डिटेल एक्सप्लेन करके लिखिं मुझे पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके लिखी कार कौन रोल किए क्या डेस्क्राइब करुच्ची। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास रे आउ किसी क्वेश्चन को डिस्कशन करवा।